चाङ्गमया The evening today is even more energized, more vibrant, and more surcharged because we have with us our family, our guiding star, the father of our Dev Sanskriti family, our mentor, the fountain of love, our own Honorable Chancellor Sir, Param Shraddhe Dr. Pranav Pandya ji. It's your love, sir, that has binded this institution together. Okay, let's proceed for the deep prajwalan. Om Agnenaya Supatharay Asman Vishwani Devavayunani Vidwan Yuyodhyasmajuhuranameno Bhuvisthante Namahuktim Vidhema. Dev Sanskriti University is not just an institution, but a family. And you know what's the reason behind this institution being a family? It is the love of our Param Shraddhe, our father, Honorable Chancellor Sir, and of the Shraddheya Ji, who are our parents, our guardians, and whose love has manifested this university into the great ambience. We are overwhelmed by your presence, dear Father. एक बार जोरदार तालियों से हमारी श्रद्धेय का स्वागत करें। और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिसका नाम है संस्कृति। Once again, the Dev Sanskriti family welcomes all the guest delegates in the third cultural evening of the 4th International Festival named as Sanskriti. आज के इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो 1 से 1.5 घंटे तक चलेगा, जिसमें संस्कृति की विभिन्न झलकियों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें भारत ही नहीं भारत के बाहर की संस्कृति को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इस सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेने के लिए आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी तालियों के माध्यम से भी अपना स्वागत कर सकते हैं। India is a land of God, a land of faith, a land of beliefs, and with all those faith and godly epics, a land of diversity. Yes, Mother India, with its 29 states and 7 union territories, like its sons and daughters, is a cradle of rich cultural diversity and colors in the customs and traditions of its place. भारत जो संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसकी संस्कृति पुरातन काल से चली आ रही है, जो आज भी अपने संस्कृति के रंग हर त्योहार हर पर्व पर झलकती रहती है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो अपने आप में मिनी इंडिया तो है ही, साथ में मिनी वर्ल्ड भी है, जहां संस्कृति की हर झलक हमें हर त्योहार हर पर्व में देखने को मिलती है। आज उसी संस्कृति की झलक को हम इस स्टेज के माध्यम से दिखाएंगे अपने बाहर से आए मेहमानों को, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और हमारी संस्कृति कितनी उदार है, हमारी संस्कृति में कितना उत्सव है और हमारी संस्कृति में कितना प्यार है। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां ऐसी संस्कृति को। The Indian history is a witness of innumerable ups and downs that this divine land has faced. Though it be the epic time of the incarnation of Ram and Krishna, or the medieval and contemporary period of history when India underwent both cultural expansion and invasion simultaneously. But what remained intact was the roots of the Indian culture, the stream which nourished every culture of the world and in the laps of whom played almost every civilization. And that is the reason why we called Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the whole world is a family, because we all are the branches of the same tree, the roots of which run deep down in our hearts. दोस्तों, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसी हमारी संस्कृति जिसकी झलक आपको आज शाम की सांस्कृतिक संध्या में देखने को मिलेगी। इस झलक में हमारे प्रदेश के रंग होंगे, हमारे देश की कुछ खास बातें होंगी, साथ ही हमारे सामने हमारे विदेशी मेहमानों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे विभिन्न झलकियाँ। साथ ही भूटान से
हमारे देश में पढ़ने वाली स्पेशल स्टूडेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तांडव, और साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो आपको आज की शाम में आनंद ला देंगे। The third cultural evening will bring before you the mini India, the vast ocean of that continuous stream which is fertilizing us all day, all night. The rich cultural heritage, the glimpse of which we got yesterday by the Odissi tribal folk and the Ramayana episodic, will reel before you for an hour by the real performances of the students of Dev Sanskriti University. This evening will take you to a journey introducing you to the lifestyles and people of the India, right from the snow-clad peaks of the Himalayan state Jammu and Kashmir till the spiritually imbibed Kanyakumari at the peninsular end. So, let's break the ice and proceed towards the cultural evening called the Sanskriti. Today, we are delighted to have with us Jagadguru Swami Amrit Suryananda Ji and their disciple group who have travelled from Portugal to India as a part of our Dev Sanskriti family and who are constantly working for the worldly peace. We are delighted to have you with us, and the starter of this evening will start from the musical performance by the Sankirtan from the Portuguese group. So friends, put your hands together and welcome the first international performance in the third cultural evening, Sanskriti, along with the Sankirtan. On behalf of the Portuguese Yoga Confederation and its president, our Guruji, His Holiness Jagadguru Amrita Suryananda Maharaja, who is the international proponent of the concept of the World Yoga Day. He proposed it for the first time in 2001, 14 years ago, so that this day becomes the first global day of humanity on the solstice of June the 21st, a cosmic auspice, the longest day of the year, day of light, which conquers darkness. We have represented here today two departments of our confederation, its choir orchestra and the Pashupati, advanced yoga demonstrators. What we will present here today is yoga, mantra, kirtana, and asana. We will use only true Indian musical instruments. Our first performance will be a homage to Mahatma Gandhi Ji and to the spirit of India, for ahimsa, for non-aggression, for respect, and for the triumph of the diplomatic solutions when resolving conflicts. Raghupati Raghava.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राघव राजा
साधु सीताराम ईश्वरा तेरे नाम सबको समझिए भगवान ईश्वर आला तेरे नाम सबको समझिए भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. And now we will present an asana demonstration, one of yoga's 14 technical disciplines. In order to be asana, there must be dharana, continuous concentration, pranayama, appropriate breathing technique, manasika, visualizing the asana made correctly, as was structured by the Adi Guru Lord Shiva, in which the practitioner fits like a mold. The asana opens the nadi, allows a full circulation of energy, controls gravity, develops muscles and joints, maintains the practitioner in a peak of youth. All of this thanks to its action on the chakra and the endocrine hormonal system. It awakens the tapha, which forges the new and determined human being. The asana that you are about to see are but a small demonstration of what the practitioner does in reality. As one gets in asana, one will stay in permanence for many, many minutes, exploring it and fully experiencing it. We ask now for your complete silence. Yoga is discipline. Asana is discipline. Asana promotes concentration. In yoga, all that doesn't aim to reach samadhi is superfluous. The sequence we are about to perform is a puja to the remarkable work of this institution, the Shanti Kunja Ashrama, and to Dr. Pranav Pandya. Shiva, 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 Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Shiva Shiva Namah Shivaya. Shiva 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 Namah Shiva. And introducing now the performers on stage. On our far left, on the sitar, we have Sarasvati. She is our treasurer. Then on her right, we have Gopalini. And then our first female voice, Puriyananda. At the baja, we have Govinda. Rama at the tabla. Myself, Anandi. And our performer, Garuda. And now, for our final performance, we will make a Lord Shiva Puja, a reverence to the Adi Guru, the first Grand Master who structured yoga. And so I would like to call on stage one of Lord Shiva's most loyal disciples, our Maharaja, Amruta Suryananda.
Yoga, when imbibed with music, connects us directly to the Supreme. And this performance was something very close to that. एक बात जो आज तक सुनी थी कि हमारी संस्कृति में एक बार जो आता है वो यहीं का रह जाता है, और आज देख भी ली. We are heartily thankful to the Portuguese group for such a wonderful and marvelous performance on this stage. अब हमारी अगली प्रस्तुति जो फिर से एक बार 7 समुंदर पार से आपके पास इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने आ रही हैं, जो अपने पास एक स्पेशल यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही यूनिक है, जिसे वो बजाएंगी, आपके सामने प्ले करेंगी. एंड देन The next performance is from Russia. This is a lady from Russia named Nika is with us with a very unique type of instrument called the tank drum,
which has its origin in US, United States. This stand drum is basically an instrument which helps in the meditation. Friends, this type of stand drum, when played, it helps in energizing and associating the music with the 7 chakras associated in the body. We all have heard it numerous times that music has a healing touch. Does it actually work? Is what we are going to see through this second international performance by Nika, who has been the student of Dev Sanskriti University years back. ये एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से, जिसको बजाने से, जिसको प्ले करने से अपने आप ही 7 चक्रों का जागरण होता है। चेतना अपने आप ही इसको बजाते रहने से, इसके म्यूजिक सुनने से मात्र हमारा मेडिटेशन लग जाता है। ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसको अमेरिका में इजाद किया गया है 2000 में, जिसके बाद ये टैंक ड्रम नाम का इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने प्ले किया जाएगा। तो काइंडली आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इंस्ट्रूमेंट को बहुत ध्यान से सुनिए, इसकी वाइब्रेशंस को फील कीजिए और इसके ध्यान और इसके मेडिटेशन में, इसके ध्यान में खो जाइए। Since it is a new invention in the field of music, so this definitely reflects that how many fields the yoga has covered and how deep has the Indian tradition and the Indian culture of yoga has reached, that this stand drum is being invented in the United States. Now I request the audience to sit very quietly and enjoy the piousness and the meditative effect of this unique drum and the unique performance by Nika from Russia. First of all, Namaste, all of you. My name is Nika, and I was a student of DSCD. I've been studying here 6 months, 3 years ago, and I'm very grateful to this place and to all the teachers, all people which I met here for all the knowledge and the experience which I got. Let's do a short meditation all together.
मित्रों, ये यहाँ की ऊर्जा का ही कमाल है, ये हमारे गुरुदेव की ऊर्जा का ही कमाल है, सदैव डॉक्टर साहब की गीता की क्लास का कमाल है कि ऐसे दिव्य वाद्य यंत्र हमारे इस ऑडिटोरियम में आते रहते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने एक वायलिन सुना होगा जो शांति का दूत था, और आज ये टैंक ड्रम जो एक स्पेशल अमेरिका में बना है और जिसको बजाने मात्र से ही ध्यान लग जाता है। आपने उस वाइब्रेशन को महसूस किया होगा, फील किया होगा। Kathak is one of the 8 forms of the Indian classical dance. This dance form traces its origin to the nomadic bards of the ancient northern India known as the Kathakars or the storytellers. The present form of this dance content traces the temple of the rituals and the influence of the Bhakti movement. Our university has more than 20 countries representatives and has several MOUs all across the globe. This performance is a complete Indian classical performance by one of the South Korean student of Dev Sanskriti University, which has soaked herself in completely in the Indian culture. So I request all the students in the audience to warmly welcome this Indian performance by the South Korean student of our university. कथक जो कि हमारा सबसे प्राचीन नृत्य है, जिसको परफॉर्म करने आ रही हैं आपके सामने राधिका। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अङ्गिकं भुवनं यशा वाचिकं सर्वोऽङ्गाम्यम् आहार्यं चन्द्र तारादि त्वं नमः स्वात्विकं शिवम् शम्भु।
कोरिया की पुत्री और भारत की पुत्रवधू के लिए एक बार जोरदार तालियां। Devbhoomi Uttarakhand, the state where we are presently, has been the abode of the god, rishis and sages of Himalaya. Before introducing you to the next program, let me tell you a little more about for our international audience that this performance, the classical Kathak performance, was performed by the daughter of South Korea and the daughter-in-law of India. So once again, thank you so much. Uttarakhand holds the diversity in the ethnicity of its land, its dance and its folk, and of course it always gets a touch of the gods because this place has been the abode of so many gods. To name is just, if we start naming them, the whole session might end. So without taking much time, let us proceed towards the next performance, the Garhwali dance. तो आप सब उन लोगों सामने प्रस्तुत छु ये गढ़वाली शानदार नृत्य. This was actually in Garhwali, that is original language of Uttarakhand. धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों ते निस्वाणी जा, ओ कथगरों ते निस्वाणी जा। धरती हमारा गढ़वाल की, कथगरों ते निस्वाणी जा, ओ कथगरों ते निस्वाणी जा। कथगरों ते निस्वाणी जा, ओ कथगरों ते निस्वाणी जा। छुमता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमता छुमा छुमले धिंग तालो। छुम 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 ता छुमता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमता छुमा छुमले धिंग तालो। ता छुमता छुमा छुमले धिंग तालो, ता छुमता छुमा छुमले धिंग तालो। मित्रों, ये थी आवाज़ गढ़वाल हिमालय से सीधे आप लोगों के पास।
This performance was brought to you directly staged from the snow-clad peaks of Garhwal and Uttarakhand. Moving next, we have the land of sands, the land of culture, the land of heritage and royalty. Can you guess which land we are talking about? Very good, audience. So, the next performance is from the state of hospitality, that is Rajasthan. राजस्थान जिसे राजाओं का देश कहा जाता है, राजस्थान जहाँ विरासत है, जहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जहाँ लोगों का सम्मान करने की परंपरा है, राजस्थान जहाँ खाने पीने की विभिन्न पद्धतियाँ हैं, उस राजस्थान का जो गीत हम देखेंगे कुछ ही पलों में हमारे बीच। राजस्थान का गीत केसरिया बालम आयोनी पधारो मारो देश। Actually wasn't Rajasthani. केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश पधारो मारे देश। This was the incredible India. Audience, these performances are not by the professionalists, but by the perfectionists of the Dev Sanskriti University, the students of Dev Sanskriti University, which has got the spark of our Param Shraddhe, Honorable Chancellor Sir, the reflection of which is here with you on the stage. एक बार फिर से कालबेलिया नृत्य के लिए जोरदार तालियां। Padharo Maro Desh, which means
You are welcomed again and again and again to India. Moving to next, we have the yoga demonstration by the girls of Dev Sanskriti University. हर बार हम ये सवाल पूछते हैं कि योगा क्या है। आज ये योगा डेमोन्स्ट्रेशन इस सवाल का सीधा जवाब है। योगा एक मेडिटेशन है, योगा एक ध्यान है, योगा एक जीवन जीने की कला है। योगा क्या है, योगा हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है, ये योगा डेमोन्स्ट्रेशन आपके बीच कुछ ही पलों में रेडी है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन योगा डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली बालिकाओं का। सत्संगति हमें सन्मार्ग पर ले जाती है और सही दिशा देने वाले गुरु या अध्यापक हमें सही दिमाग देते हैं। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे खुशबुएं फैलती हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है, और जब ये चारों दिशाओं में फैलता है तो हमारा व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। The next posture is the lotus pose. Lotus flower is associated with spiritual awakening. The great Chinese philosopher Confucius stated that I have a love for lotus. While growing in mud, it still remains unstained. हमारी जिंदगी में अनेक तूफान और चक्रवात आते हैं जिनका हमें हर पल हर क्षण सामना करना होता है। अगर हम उसे सही तरीके से पॉजिटिव में सामना करते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व में हम निखार लाते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि हमें अपनी जिंदगी में सामंजस्य और संतुलन कितना जरूरी है। There is a Japanese proverb that if you fall down 7 times, rise up the 8th time. जीवन में संतुलन और सामंजस्य होने पर हम अपने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विभिन्न स्तरों पर विकास कर पाते हैं। जो आयाम हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जब ये आयाम विकसित होते हैं तो हमारा रूप ही बदल जाता है। The next asana is focused on Om. Omkar asana. Om is the sacred syllable representing Brahma. Om therefore represents both the Nirgun, that is unmanifest, and Sagun, that is manifest aspects of God. जैसा कहा गया है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। The next posture tells us that every human being is full of immense potential. As Swami Vivekananda has said that every soul is potentially divine. हर व्यक्ति अपने अंदर एक ओरिजिनल क्वालिटी के साथ होता है। अगर उसे अपनी ओरिजिनलिटी का पता चल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। The mind of an oscillates between the past and future, causing worry and anticipation. Desire, fear, craving, aversion grip the mind. To drop the conflict between the mind to the present moment, this is the key to happiness and depicted by Sri Padmasana.
हमारी जिंदगी जब ऊंचे आयामों में पहुंचती है तो चारों दिशाओं से सद्गुण खिलते हैं और प्रशंसा मिलती है। This posture of ours tells that no matter how hard the situation in our life are, if we channelize our energy towards the good, we can overcome anything. चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, किसी भी रास्ते पर अगर इंसान चलता है तो हमेशा उसे अच्छाई का रास्ता अपनाने पर ही सही मार्गदर्शन मिलता है। और हमें सही मार्गदर्शन देने वाले हमारे श्रद्धे जो हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। Every country has its own culture. In spite of such diversity all across the world, yoga unites us on a common platform. हम सब यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग उपस्थित हैं और हम सब अलग अलग संस्कृति के होते हुए भी एक हैं। इस वक्त हमारी अनेकता एकता में बनी हुई है, जो यह बच्चे प्रदर्शित कर रहे हैं। The next posture depicts Shakti, meaning empowerment. शक्ति, जिसके हवाओं में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये नौ दुर्गाएं शक्ति का स्वरूप है जो हमें सक्षम बनाती हैं। जिंदगी के इस रेस में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा कुछ भी इस सृष्टि में नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। Basically, the message here is human beings are suffering from sadness and culture cultivates the humanity, spirituality connects us to God, and these yoga postures tell us the deep correlation and connection of one culture and spirituality. Thanks to everyone for your time and attention. Thank you so much. Thank you all. तो आपको वो जवाब मिला कि योग क्या है। वास्तव में ये वो विद्यार्थी हैं, यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं वो वास्तव में योग करते हैं अपने जीवन में। और ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने देश ही नहीं देश के बाहर भी कई मेडल्स जीते हैं अपने विश्वविद्यालय के लिए। और वास्तव में योग क्या है इसका मर्म हमें समझाया है। These students have won many prizes at national and international level, and these are the practitioners of the yoga. They practice both the theory and the practical of the yoga. Practical by the teachers in theory, by our ever chancellor in the various classes of Dhyan and Gita. Proceeding to next, we have again international performance from one of our students from Bhutan, the Shiv Tandav Nritya. Shiv, the Lord of Time. तो आपके सामने प्रस्तुत है ये शिव तांडव नृत्य। जोरदार तालियों से स्वागत करें। Straight from Bhutan.
शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर धरञ्जय स्फुलिङ्गपाविनीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुता करालभालपट्टिका दगज्ज्वलद्धरञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके करालरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रचिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरद्भूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो नमः प्रवृत्तिकदा सदा शिवं भजाम्यहम् शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् Shiv Tandav Nrit to nourish the balance of the universe. Actually, this is not a folk dance, but a divinely dance that is being performed by that Lord Shiv performs when he got enraged because of the disturbing balance of the universe. So, moving next, we have Sufi dance. Sufism is Islamic mysticism. The word is derived from the Arabic tasawwuf, which means to seek the purification. ये सूफी नृत्य बस एक ही भाव लेके आपके बीच आ रहा है, ए मालिक बस तेरी रजा रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे. The Sufis are soaked in the divinity with God, and this performance will depict you the message of being the instrument of God.
This is the composite culture of India. This performance was brought to you straight from the sands of Arab. And actually, it was the Bhakti Yog of the Sufis. So audience, are you imbibed with that Bhakti? Moving next, we have the central state of the India. Can you guess which state is this? A little more down the Madhya Pradesh, it is the heart of our Gurudev, the Chhattisgarh, Dhan ka Katora. छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अब हमार छत्तीसगढ़िया प्रोग्राम आवत है। Actually, Chhattisgarhi. जनता कैसन लागेस? बने बने लागेस? This was the Chhattisgarhi dance, and again it was not performed only by the students of Chhattisgarh but by all the students comprising of all the states that live here in Dev Sanskriti University. And it is what once Gurudev said, that I want an institution where the cultural values could be imbibed to the students of the university, of the institutes, and this is the reflection of that. So moving next, we have a yoga demonstration, which is a salutation to the Shiva who taught the science of Hatha Yoga. It is the aspirant stairways to the heights of the Raj Yoga. How a practitioner from Hatha Yoga moves slowly and gradually to the Raj Yoga when they practice it among the society. So this is well depicted with this by this yoga demo.
And one thing that has to be mentioned here, that must be mentioned here, that again these are the students who have just joined the university in this very session, just after immediately completing their intermediate classes. So welcome them with a huge round of claps. अनंत शिव योगी महादेव आदे अनंत शिव महाबली शिव महाबली शिव 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जबाल सूर्याय दक्षा त्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठशम्भो भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवा शिवशेखराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय ीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यम् यः पठेत्
नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय Friends, the students deserve more. ये आपने यात्रा देखी कैलाश मानसरोवर से वृंदावन की, भगवान शंकर से लेके श्री कृष्ण की. Moving next, we have a fusion dance in which the life story of the Lord Krishna will be depicted. Actually, friends, in India we have a very special dish called khichdi, and which in Shantikunj we call it Amritasan. So this fusion is a khichdi of the Eastern classical dance and the Western combination. Actually, this is like a खिचड़ी जो हमें अपने माता जी के चौके में हर बुधवार को मिलती है. ये खिचड़ी इतनी सात्विक है कि इसको समझने में बिल्कुल भी हमें आसानी नहीं होगी. तो आइए देखते हैं ये वेस्टर्न और ईस्टर्न खिचड़ी का शानदार प्रोग्राम. जोरदार तालियों से स्वागत करें. Presenting before you the fusion.
श्याम बिना राधा नाच श्याम बिना राधा नाच श्याम बिना श्याम बिना श्याम बिना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ईस्टर्न वेस्टर्न खिचड़ी? This was the fusion. Now let's move again to the peaks of Himalaya, to the crown of the Mother India. Which state is this? Exactly. Now we'll move towards the Jammu and Kashmir. Before we present this dance, let me tell you, friends, that just a few weeks back, Jammu Kashmir has underwent a tragedy in which cloudburst happened there and mass destruction was happened there. But still, what is the zeal of the culture of India is now going to be represented on this very stage once again for you, that out of the natural calamities still that remain intact was the culture of Jammu and Kashmir. Presenting before you a Dogri dance, which is among the 7 most used language of the state. The Dogri is one of the main language used. So, are you ready? आओ करवा जम्मू का सैर।
पीरिया बाकिया पीरिया बाकिया फिरतिया तारा पर बंगलू को आई दिया 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 Friends, let me tell you that this Jammu cultural performance, one of the performer of this group has performed this very particular dance, who has choreographed it in the Russia, where she has presented all the cultures of Jammu and Kashmir. So definitely this group deserves once again claps from your side. अब हमारी अगली प्रस्तुति जो आ रही है सीधे गुजरात से। गुजरात में युवाओं का उत्साह और नवरात्रि की शक्ति दोनों को साथ लेके आ रही है ये गुजराती प्रस्तुति। The Gujarati dance symbolizes that God represented in the feminine form in the round circle, that the Garba that they perform in a round circle is the only thing that remain unchanged and intact, and in this constantly changing universe in which life and death are the inevitable incidents. So with this message, presenting before you the Gujarati Garba.